Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of practical geometry. This is second question of its exercise 10.3. So the question says that construct an isosceles triangle in which the length of each of its equal sides is 6.5 centimeter and the angle between them is 110 degree. So firstly हम एक line segment draw करेंगे with the help of a scale of 6.5 centimeter. नेम दे देंगे AB सेंटीमीटर. देन एंगल ए पर 110 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. देन 6.5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजर करेंगे कंपास से. ओपन करेंगे कंपास को 6.5 सेंटीमीटर. देन पॉइंट ए पर फिक्स करके एक आर्क कट करेंगे. फिर हो जाएगा पॉइंट सी. ये हो जाएगी साइड हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर. देन सी को बी से ज्वाइन कर देंगे. सो जगह ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी. हियर angle A is 110 degree and AB equal to AC equal to 6.5 centimeter. Thank you.